This is India, the world's fastest growing major economy, expected to be the world's third largest economy by 2027, only behind USA and China. Currently, India is the fifth largest economy in the world, with a huge GDP of almost $4 trillion. And according to IMF, India is on the way to overtake Japan in the end of this year and will become the fourth largest economy in the world and second largest economy in Asia continent. India has already become the third largest economy in the world by PPP GDP, with a massive economy of 14,600 trillion. This year, India is going to grow with the impressive growth rate of over 7%, which is much higher than all major economies. India is not only the fastest growing major economy in the world, but also the world's fastest growing stock market, the world's fastest growing real estate market, the world's fastest growing startups ecosystem, and home to the highest numbers of under construction mega projects in the world, spending over $1.9 trillion just on its infrastructure between 2018 to on the way 2025. India is improving its infrastructure rapidly, and due to the attractive business policies of the government of India, such as PLI scheme, big companies of the world are starting their production in India. The biggest example of this is Apple, which working on produce 25% of its smartphone production from India by the next year. India is the fourth most powerful military in the world and having the second largest active army in the world, with 1.4 million active military personnel. And the country is one of the few countries in the world that has lethal nuclear weapons. Also, India is modernizing its military at a very fast pace by spending $80 billion on its military, which make India the world's fourth largest defense budget. India is not only paying attention to its infrastructure and military, but is also paying equal attention to technology. India is one of the 4 countries in the world that have developed anti-satellite weapons. That means India has capability to destroy the communication system of any countries in the world by destroying their satellites in the space. An Indian space research organization has successfully launched over 435 foreign satellites for 36 different countries, including satellites of USA, Germany, France, UK, and Russia. India has become the first country in the world to reach Mars in its first attempt and become the first country in the world to successfully land a spacecraft on South Pole of the Moon. And did you know that India has created an incredible record by successfully launching 104 satellites by a single rocket? Last year, India has overtaken China and now become the most populous country in the world with the world's largest young force. More than 50% of its population below the age of 25 years, and this young force is starting their business, due to which India has become the world's largest and fastest growing startup ecosystem. Today, with over $900 billion industrial output, India is among the world's top 5 most industrialized countries. Big companies of the world and Indian companies are starting their production in India, due to which India is now becoming the manufacturing hub of the world. Last year, India had total exports of $776 billion. And the way the industrial growth is visible in India, by 2030, India's output is expected to be more than $3 trillion, and export is expected to be $2 trillion, which will make India the third largest exporting country in the world after China and USA. Due to this, India's impressive growth, the wealth of the people of India is increasing very fast. Today, with a wealth of $18 trillion, India has become the 4th wealthiest country in the world, and the way India's wealth is increasing, by 2030, India's wealth will cross $30 trillion, which will make India overtake Japan. Will become the 3rd most wealthiest country in the world after USA and China. The way India's economy and wealth is growing, not only the people of India but also the big companies of the world are investing in India's stock market, due to which today India's stock market is the fastest growing major stock market in the world. In just last 1 year, India has overtaken France, UK, and Hong Kong, now become the world's 4th largest stock market with a market cap of more than $5.2 trillion. And according to IMF, the size of India's stock market will be more than 11 trillion by 2030.
then India will overtake Japan and become the third largest stock market in the world after USA and China. India, the world's fastest growing major economy, the world's fastest growing major stock market, the world's fastest growing real estate market, and the world's fastest growing startup ecosystem is expanding at an annual rate of 7%. Already the fifth largest economy, it will rank third by 2027, after USA and China. Will it become a superpower? Give your opinion in the comments. बनने में उनके जो है ना बहुत ही ऐसे थोड़ा सा टाइम रह गया, जल्दी वो सुपर पावर भी जो है वो बन जाएंगे। और पाकिस्तान के हालात तो तुम लोगों को पता है ना, सुबह की कुछ 70 दफा जो है ना यहाँ पे लाइट जा चुकी है, आती है जाती है, घंटा आती है 5 मिनट रहती है, फिर घंटा जाती है, फिर 5 मिनट रह जाती, पता नहीं क्या लाइट ने बेड़ा गर्क जो है ना वो किया हुआ है काम। हम फिर क्या करें, फिर ऐसे काम करते हैं अंधेरे में, देखो तुम लोग, और क्या जो है वो फिर कर सकते हैं। बाकी इंडिया का एक मिसाइल अगर चला जाएगा ना ऊपर हवा में, तो जमीन पूरी का जो है वो जिसे कहते हैं ना नेटवर्क की, पूरी दुनिया का जो कनेक्शन है नेटवर्क का, वो भी काट सकते हैं। उनके पास इतनी पावर है। और रियल स्टेट मार्केट में भी भाई, स्टॉक मार्केट में भी वो जो है वो आगे जा बनेगा यार, क्यों नहीं बनेगा। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म यार। बिल्कुल बनेगा भाई, मेरे कौन कहता नहीं बनेगा। किस रफ्तार से जा रहा है भारत यार। दुनिया में वाहिद ऐसा देश जिसकी 7% की से ज्यादा ग्रोथ रेट है, 7% से ज्यादा मेजर, ठीक है। दुनिया का वो देश जिसकी स्टॉक मार्केट सबसे तेजी चौथे नंबर पे भी आ गई और तेजी से ऊपर जा रही है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वाला देश, बिल्कुल सबसे ज्यादा जवान यंग जनरेशन वाला देश, स्टार्टअप्स वाला देश, सबसे ज्यादा स्टार्टअप वाला देश, सबसे तेजी से जो है ना इकोनॉमी को ऊपर लेकर जाने वाला देश। 50% मतलब 140 करोड़ लोग हैं इंडिया के ना, 54%, तो उसमें से 54%। कमाल, कुछ चीजों का हमें पता था, जैसे वो 2030 तक मैंने सुना था, बट 2027 में उन्होंने बीट किया 3 साल पहले। और मैंने सुना फिर शायद 2030 तक फिर वो होगा कि 1 ट्रिलियन इन्होंने एक्सपोर्ट चली जाएंगे। अभी $70 बिलियन है, और इवन $1 ट्रिलियन तक की इनकी वो हो जाएगी आईटी इंडस्ट्री 2030 तक। वही मैं बता रही हूँ कि वीडियो में हर फील्ड में बताया, मिलिट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, यार उनका जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए ना पिछले 10-15 साल में, लिटरली वो अमेजिंग है। उन्होंने इंडिया का मतलब वो नक्शा ही बदल दिया वाकई। कितनी चीजों में उन्होंने अब बताया, मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो इंडिया बन गया हुआ है। फिर एप्पल अपने 25% के 50% तक इमर्जिंग। तो ये था जी इमर्जिंग इंडिया, जो कि 2030 तक क्रॉस कर जाएगा और पहुंच जाएगा 3rd प्लेस पे, और 5वें पे चल रहे हैं ना, अभी 5th पे है, और एशिया में 2nd पोजीशन पे आ जाएगा चाइना के बाद। मुझे लगता है इसी साल के एंड में या शुरू में ये 4थे पे तो आ जाएगा। हाँ, वो अभी पीछे न्यूज आई थी कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई है, लेकिन अभी क्योंकि डाटा जो है वो वेरीफाई होगा, आएगा, अपडेट होगा तो फिर पता लगेगा। लेकिन ये है कि इंडिया जो है वो काफी रैपिडली जो है वो ग्रो कर रहा है, बिल्कुल। तो सून पॉसिबल है कि इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, मतलब सरप्राइजिंगली स्टॉक मार्केट के ऊपर देख रहे हैं। किसी भी सेक्टर को उठा के मेडिसिन की बात करते हैं तो पाकिस्तान में भी आपको मेडिसिन देखने को मिलेगी। टेक्सटाइल के सेक्टर की बात कर ले, यहाँ तक कि अगर आप टेक्सटाइल के अलावा जो इनकी क्या नाम है मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, स्पेशली बेसिकली इस वीडियो के अंदर ये बताया गया कि इंडिया ने किसी एक फील्ड के अंदर, एक डिपार्टमेंट के अंदर ग्रो नहीं किया। उन्होंने अगर मैन्युफैक्चरिंग में, लोकल मैन्युफैक्चरिंग में इम्प्रूवमेंट लेके आए तो साथ ही साथ इकोनॉमी में लेके आए। इकोनॉमी में अगर लेके आए तो साथ साथ अपनी जो सिटीज है उनको एक कह लें कि हाइब्रिड मॉडल पे लाने के लिए, लाइक इस सेंस में कि डेवलप करने के लिए, और बड़ी से बड़ी आइटम हर चीज बनती हुई हमें दिखाई दी है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, लाइक हर फील्ड के अंदर इंडिया ने अपना ग्रो करके दिखाया। और इस वीडियो से हमें यही पता लगा कि चाइना, जापान, फ्रांस, इनके